Good morning to all. I am Jansi Gaswala from 9th standard in Gajera School, Sachin. Hi. Good morning, ma'am. I am Singh Jagat from 12th standard from Gajera Vidyabhavan, Sachin. I'm Pragya Kapadiya. I'm a designer from NIFT Mumbai, Fashion design. but mountaineering is my passion, and I did my BMC from Manali AV Mass. It is an honor for us to have with us a great personality who has consumed herself to light the society. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Thank you, girl, for inviting me. As this show is regarding nature and our school believes in conservation of nature, on the behalf of my principals or teachers, I would like to offer you a small plant. Oh, thank you so much. Welcome, ma'am. To better understand this event, we firstly familiar our today's respected guests. So I would like to request my colleague to introduce our guest. Good afternoon, ma'am. So we got the chance to explore the beauty of nature and most beautiful Himalayan mountain ranges in the world by our chief guest. It's my honor to introduce you. The name Pragya means wisdom. The name itself says a lot by exploring everything. Respected Pragya Kapadiya is a co-founder of Explore Himalaya and she is certified as mountaineering from Abhivimas, Manali. She completed her basic mountaineering training in 2018 and good for trekking in every 2 to 3 months. Ma'am, I am very curious to know about you and your work. So let's begin our program. Ma'am, I want to ask, would you ever excited for this field? Yes, I was. From my first exposure was in grade 7. I went to Dang for a small track with Nature's Club, Surat. So that was the first time when I was exposed to this kind of activity. So it was always in my back of my mind to explore Himalayas. I always wanted to do that. Okay, ma'am. I and the people wants to know about which skills we develop through tracking. See, tracking skills that are developed in tracking is first is survival skill. When you have very limited sources in your hand and when you are in the wilderness and on mountains, you are not sure about climate. Climate changes Yes. 360 degrees just like that, flash of the seconds. You have to be like in your this thing, what we say, कि भी एकदम से तुम ऐसे पकड़े जाते हो कई बार स्टॉर्म्स में, तो वहां पे तुम कैसे सर्वाइव करते हो एक्सट्रीम लेवल का, वो तुम्हारा एक सर्वाइवल स्किल डेवलप होता है. यस. So second thing that mountains gives you is the skills that you asked me. Yes. ठीक है, कौन सी स्किल डेवलप Yes. होती है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल. कई बार वहाँ पे एवलांसेस आ जाते हैं, कई बार मौसम खराब हो जाता है, तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू डिसाइड इन अ वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम्हें डिसेंड वापस करना है या यू वांट टू स्टे एंड यू वांट टू क्लाइंब द हाइट. सो दैट वाज समथिंग वेरी एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है. सो ये स्किल डेवलप होती है, प्लस तुम्हारा विल पावर, नेवर टू गिव अप. तो विल पावर के भाई तुम्हें एक पॉइंट दिया गया है कि तुम्हें इस पॉइंट पे सबमिट करना है, चाहे वो कोई भी हो, इवन इन ट्रैकिंग, तो वो पॉइंट पे तुम्हें अपने आप को पुश करते हुए पहुंचाना है. इट्स नॉट इजी टू क्लाइंब अ माउंटेन, बट देन एट द एंड यू हैव टू कीप गोइंग, यू नो, कीप मूविंग, चाहे वो क्लाइमेट कैसा भी हो, बरसात है या स्नो हो रही है, बट इफ यू वांट टू सबमिट द पॉइंट यू विल कीप पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स इट. सो एक विल पावर तुम्हारा बहुत ज्यादा, तुम अपने आप को कोर तक टेस्ट करते हो. So that is 2-3 major skills that I can tell you कि जो trekking और mountaineering में develop होती है. Thank you so much, ma'am. Ma'am, what's the difference between mountaineering and trekking? See, mountaineering is a very vast subject. Okay, it's just imagine that एक बरगद का पेड़ है, that is mountaineering. Trekking is merely a branch of mountaineering. माउंटेनियरिंग की दूसरी ब्रांचेस में तुम ये काउंट कर सकते हो, रैपलिंग हो गई, जुमारिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, रिवर क्रॉसिंग हो गया. दीज ऑल थिंग्स दैट कम्स इनटू द सेम टेंट, आई कैन से दैट. यस, सो ट्रैकिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ माउंटेनियरिंग. Ma'am, what are the career options in this field? करियर ऑप्शंस में ऐसा है, दिस इज अ वेरी एडवेंचरस फील्ड
and probably one of the riskiest sports. Okay, so you cannot start any career without a proper training. And for training, there are institutes in this area. So they provide you proper training. There is one institute called in, I think, Uttarakhand, that provides you leadership training for every adventurous sports. So after you get this certificate, what you wanted, and then you have to take permission from the state government, tourism department of there, and then after they have few norms, you fulfill. If you are getting that norms rightly, you'll start your own company then, trekking company or traveling company, and then if that depends on your passion, sky is the limit. Have you ever wanted to be a mountaineer? Yes, I always wanted to be a mountaineer from grade 7. But this training is pretty difficult, so I never got a chance to go for it. Okay. Yeah. So, ma'am, we are very eager to know about your most memorable camping experience with us. Please, ma'am, can you share with us? Yes, I have one very beautiful experience that was a triggering point why I chose this field. I keep on exploring Himalayas. I was on the track on Parvati River, and there that time, that evening was very beautiful. It was very, I actually got connected towards nature on that particular moment. I have seen this moon rising from the back of the mountain, and I can see this rays coming out from there. It was beautiful. The sky, the nature, the river की जो आवाज आ रही थी, it was breathtaking. It was very connecting. So that was one memory that I can never forget. What a was- lovely memory. It was. That was interesting. Yeah, when you sleep between the jungle with no roofs on your head. But it was really beautiful, trust me. It was. My dear friends also wants to know about you. Hello, my name is Aishik. I'm from 11th standard, Gajera Vidyabhavan, Sachin. Hi. This is Sripati Karthik from Land Commerce, Gajera Vidyabhavan, Sachin. Hi. I'm Vidyabhavan from 11th standard from Gajera Vidyabhavan, Sachin. Hi. And Okay, we want to know that which are the basic gears that are used for mountaineering and trekking. The mountaineering, again, I told you as before that it's a very vast field. Trekking is one of the part of it, and so is climbing. Climbing means when you decide to summit a mountain, peak submission at a certain kind of a time limitation. Okay, that is called summit. So for that, there are many gears like ropes hai, ice axes hai, helmets, seat harnesses, carabiners, gaiters, crampons. Crampons are basically used to walk with the glaciers हो गए या कोई जमी हुई बर्फ हो गई hard surface of ice. Okay, so different shoes. While trekking, we need ankle support shoes, waterproof shoes, good company के कोई भी shoes जो भी. And when there is one more part that is called rock climbing, for that you don't need an ankle support shoes with a flat surface. And for trekking, we need little bit sole जो होता है वो अच्छी grip वाला sole चाहिए with the good ankle support क्योंकि पैर twist होने का chances रहते हैं. Trekking में poles use कर सकते हैं. People walk with the poles. वो stick जो आती है, Yes. right? उसकी. Otherwise trekking के कोई खास gears नहीं है. Tent हो गया, sleeping bags वो सब तो that is not gears. But for climbing, we need all the gears. There are many more gears also. I have just told you few of them, not all of them. So this is the gears, basic gears. But every sports जो ये mountaineering के tent के अंदर आता है, they all have their special kind of gears. Skiing के लिए अलग skings होती है. Skateboarding भी आती है इसके अंदर. तो इन सारी चीज़ों का अलग gear होता है. When you are this thing, rafting है, अरे सॉरी नॉट राफ्टिंग, रैपलिंग. तो रैपलिंग के अलग नॉट्स होते हैं. वो इजीएस्ट वे है माउंटेन डिसेंड करने का. ठीक है, उसका एक प्रॉपर टेक्निक होती है. माउंटेनियरिंग इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड ऑल टुगेदर. देन देर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड जुबारिंग. सो दैट कम्स इन टू सेट, two pieces in one set, and that is a very easy technique to climb up, to ascend the mountain in a certain position. And this thing is always used for this in a pair only.
Okay. Okay. So this is all our different gears, right? In this field, basically. Ma'am, how's the mountaineering helpful physically or mentally? Mountaineering don't help you physically or mentally, but if you don't have any physical fitness, it is difficult to pursue the sports, right? Mentally, yes, it is helpful in many ways. Sometimes the me time that mountain provide you there without any technology, without any network, so that helps you to focus in your life, makes you a better and a stronger human being getting into the wilderness. Okay, focus means that clears your mind. The temperature, the climate out there, that actually clears your thought process. You know, you get time for yourself, जो तुम लोगों को यहाँ नहीं मिलता, बच्चों को especially, है ना? You're always busy. You don't have time to even stop and think, Yes. right? Right. But when you get into the wilderness, mountains give you this opportunity to be a little steady, think about your future, think about your this thing. You connect to yourself, right? When you connect to nature, you connect to your own self. So that's how mentally it helps. Physically, yes, well, तुम जब ऊपर जाते हो तो फिटनेस एक लेवल पे आती है तुम्हारी, बट यस वो उसके लिए भी तुम्हें फिजिकल फिट होके ही वहां जाना पड़ता है. First, we have to get physical fit, and Yes. after we can go there. यस मेंटली डेफिनेटली वहां पे जाके फर्क पड़ता है, बट नॉट ऑन फिजिकल फ्रंट. यस, लिटिल बिट. लोग सोचते हैं ना कि वजन उतर जाएगा माउंटेन्स पे जाके, ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट यू कीप ऑन ईटिंग मोर. हाँ हाँ, पर वो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वो तुम्हें टोन्ड अप कर देता है. हाँ. और Ma'am, do you ever feel in your life that you have a real mountain to climb? oh yes, I really want to climb 2-3 peaks. मेरे उसमें है लिस्ट में, बट उसके लिए समर्स का मैं वेट कर रही हूँ एंड आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट. लेट्स सी, होपफुली आई क्लाइम 2 peaks in coming summers. That's my target. Hope you achieve your wish. But how many weeks do you dedicate for climbing or say training? See, I go on trekking for like every 1 or 2 months for 10 days. Yeah, and that's like proper trekking is for like 3-4 days to 5 days. But my training, I keep training myself every day. I keep running for 1 hour on inclined surface, more or less on flyovers, yes. But 24/7, I am very much into this field. Means you are always fit for that. Always fit, yes. I do my yogas in the evening. So I have to be fit, otherwise I cannot climb mountains. I cannot do trekking, right? So training तो मेरा चलता ही रहता है. Even I'm very much conscious about my food habits also. Yes. Hygiene. Hmm? Hygiene. Hygiene, yes. Next. You're so strong. Ma'am, Willpower. All is here. Everything is here. You are always positive. Yeah. Mountains teach that. Trust me. Mountains teach you to be positive, because you cannot be negative and you cannot get scared when you are into bad weather and you're stuck up there. You cannot do that. सर्वाइवल स्किल्स जो मैंने कहा था ना डेवलप होती हैं, वो इसी तरह से होती हैं कि जब बरसात में तुम फंस गए और टेंट तुम्हारा दब रहा है, गीला हो रहा है, तब तुम्हें क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है उस ठंड को. तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो माउंटेन्स तुम्हें अपने आप सिखाता है, यहाँ पे नहीं सीख सकते हम. Mountains check our abilities. Abilities, yes. Mountains do check our abilities, capacities. Capacities. have you ever been discouragement or have any fear? If yes, then how did you deal with them? I remember one time when I really got scared. I just started with my PMC course. Okay, so वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग सिखा रहे थे और मैं 1-2 बार गिर गई थी. तो आई हैड दिस प्रॉपर गियर्स, पर मुझे काफ़ी लगी. तो उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला, मैं कहा कि सी दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स, दिस इज़ रियली टफ. एंड ही वॉज लाइक ओके, इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग दिस, फाइन, कम बैक, 2-3 दिन मज़े कर मनाली में एंड देन कम बैक. एंड मैं कहा ओके, और आई वॉज स्टार्टेड लाइक मैं अपना सामान पैक करने लग गई थी. एंड देन वन दिस
स्मॉल थॉट कि अगर मैंने आज नहीं किया ना तो फिर मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी. एंड आई लव दिस विल्डरनेस थिंग सो मच. आई थॉट इट कि एक और चांस मैं देती हूँ अपने आप को. लेट मी ट्राई फॉर 3 more days. अगर नहीं होगा फिर मैं निकल जाऊंगी. बट वहाँ पे आई एक्चुअली पुश्ड माई सेल्फ सो हार्ड कि उसके बाद फिर मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया. दैट वाज द ओनली वन टाइम दैट आई गॉट स्कैर्ड. अदरवाइज आई माउंटेन्स टीच यू टू बी फियरलेस. दे डोंट टीच यू टू बी स्कैर्ड. डर कभी भी नहीं लगा मुझे. आई ऑलवेज फाउंड माउंटेन्स टू बी वेरी वेरी वेलकमिंग. They are very beautiful, yes. That positivity gives admirers to a lot of children. I hope कि kids understand the value of wilderness. Yeah. Because environment awareness का भी है ना, इसके अंदर अपने आप आ ही जाता है. See, tents हम लोग कहीं पे भी नहीं लगा सकते. जहाँ पे water bodies होती है ना, हम लोग वो water bodies देख के टेंट लगाते हैं और वो water हम लोग पीने के लिए काम में लेते हैं. Yes. So you actually don't waste a single drop of water. Food, लिमिटेड फूड होता है तो हम लोग फूड को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं. वी डोंट थ्रो दैट फूड कहीं, वी डोंट वेस्ट इट. तो ये कुछ सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है वहाँ पे. Ma'am, do we need any training for climbing and trekking? यस, नॉट फॉर ट्रैकिंग. ट्रैकिंग के लिए खाली तुम्हें फिजिकल फिटनेस थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लेग्स मसल स्पेशली. बट येस, फॉर क्लाइंबिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और परमिशन भी लेनी पड़ती है. जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग तुम्हें रेकमेंड करेंगे तुम्हारी फिटनेस देखने के बाद. फिर तुम्हारा जो ये क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो लोग परमिशन देते हैं. आई गेस यस, मैं ये नाम सही ले रही हूँ. उनकी परमिशन देते हैं और वो तुम्हें टाइम अलॉट करते हैं कि 4 दिन है और इस टाइम पे तुम्हें ये पीक सबमिट करके वापस बेस कैंप पे आना है, तब वो तुम्हारा सबमिट कंप्लीट होता है. और वो क्लाइंबिंग हम लोग रात में करते हैं, दिन में क्लाइंबिंग नहीं होती है क्योंकि स्नो पिघलती है और सॉफ्ट स्नो के अंदर चलना बहुत डिफिकल्ट होता है विद द 15-20 kgs ऑफ बैग एंड ऑल इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो हम लोग हमेशा रात को जब सूरज खत्म ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद हम लोग हेडलैम्प्स के साथ हम लोग क्लाइंब करते हैं. It's very और- dangerous. नहीं, इट इज़ डेंजरस बट नॉट इन अ वे इफ यू आर वेल ट्रेन्ड. अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो माउंटेन्स तुम्हें एक झटके में उसकी पनिशमेंट देंगे. देयर इज अ टेक्निक. स्नो क्राफ्ट है, ग्लेशियर ट्रेनिंग है, वो सबकी अलग अलग, इवन चलने की भी टेक्निक्स है, उतरने की भी टेक्निक्स है. तुम नॉर्मल ऐसे चढ़ भी नहीं सकते और उतर भी नहीं सकते. आइस एक्स जो थर्ड लेग हम लोग बोलते हैं, Yeah. ये माउंटेनियर्स का, इसका एक प्रॉपर यूज है. ये ग्लेशियर पे हम लोगों की कई बार जानें बचा सकता है. Yes. आइस एक्स, हम लोग हमारा पूरा वजन इसके ऊपर लटका के हम लोग लटक जाते हैं. इसके साथ सेल्फ रेस्क्यू भी टेक्निक्स हम लोगों को आती है. तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना तुम माउंटेन्स में क्लाइंब नहीं कर सकती, ट्रैकिंग कर सकती. ट्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है, नॉट क्लाइंबिंग, नॉट पीक सबमिशन. So, ma'am, how can we develop these skills and interest among the students? एक्सपोजर. जैसे मुझे एक्सपोजर मिला था व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7 और जहाँ पे मैं डांग गई थी और जहाँ पे मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाई, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक चीज़ है. यू नो, जंगल में रहने का क्या एक्सपीरियंस है. जब मैं उस माउंटेन के टॉप पे थी और जब पूरा आसमान दिख रहा था सामने, मिल्की वे दिख रहा था, शूटिंग स्टार्स दिख रहे थे, और जो स्मेल आ रही थी उस खेत के अंदर से एकदम खुशबू जैसी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहीं पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो अगर एक्सपोजर ही नहीं दोगे, जैसे लोग जाते हैं घूमने जाते हैं राइट, तो वो लोग वैली के अंदर पॉइंट्स देख के आ जाते हैं, सनसेट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. नोबडी एवर थॉट अबाउट के इसके ऊपर भी तो कभी देखे तो सही. Yeah. तो एक्सपोजर ही नहीं है किसी के पास, तो फिर वो लोग नहीं कनेक्ट कर सकते. तो उसके लिए एक्सपोजर छोटी एज से देना शुरू करें राइट. अपने के भी इवन स्कूल ट्रिप्स भी मतलब प्रॉपर स्कूल ट्रिप्स, जैसे प्रॉपर विल्डरनेस के लिए स्कूल ट्रिप्स हो गई, जो फॉरेस्ट हो गया अपना, रिजर्व्स हो गए, या जंगल हो गए, या डांग जंगल है अपना. Yes. ये सारी जगहों पे अगर स्कूल्स ट्रिप्स लेके जाएंगी तो बच्चों को ऑटोमेटिकली इस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा. तो उस हिसाब से, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रिप में गए और चलो हो गया, नहीं. कनेक्ट होने के लिए
बार बार नेचर के अंदर जाना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहना पड़ता है, उस चीज़ को अंदर से फील करना पड़ता है, तब वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तब ये चीज़ इसमें इंटरेस्ट आता है। कईयों को नहीं भी आता है, दे डोंट लाइक द डिस्कम्फर्ट जो हम लोगों को वहाँ मिलता है। हम लोगों को यहाँ पे बहुत कंफर्ट और लग्जरी मिली हुई है, That's राइट? right. Everyone वहाँ पे likes तुम्हें it. स्लीपिंग बैग में सोना है, Comfort. देयर आर नो बेड्स, No one wants to go out of their comfort zone. कंफर्ट जोन, Yeah. एग्जैक्टली। Yes. वो लोग कंफर्ट जोन को इतना क्यों करना है ये वो वाली बात है। बस हो गया। Okay, ma'am. The last question is give some messages for the people in general. Follow your passion, guys. When you follow your passion, everything comes. और please respect natural resources. What nature is providing. Glaciers पिघल रहे हैं. Please respect water. Especially I want to tell people जो पानी, because हम लोग नदियों के ऊपर बहुत सारे बांध नहीं बना सकते हैं। हमारे फ्रेश वाटर्स जो ग्लेशियर से आ रहे हैं वो समुद्रों में मिल रहे हैं, एंड वी एक्चुअली गाइज आर वेस्टिंग एवरी सिप ऑफ वाटर। भाई ठीक है ना, शावर में 2 घंटे खड़े हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, बट इट इज एवरीथिंग इज रॉन्ग देयर। क्योंकि वहाँ पे जो जिस ग्लेशियर में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, आई रिमेम्बर कि वो मतलब 1 इंच ग्लेशियर पिघलना इज अ बिग थिंग। 1 इंच पूरा ग्लेशियर पीछे हो गया, 1 से 1.5 इंच, तो दैट इज बैड साइन फॉर एनवायरमेंट। दूसरा कि भाई अगर आप लोग ट्रैकिंग करने जाते हो तो L&T वहाँ पे लिटर मत करो प्लीज़। सारी छोटी छोटी चॉकलेट्स के रैपर भी वो लोग वहीं फेंक के आते हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट नेचर। आई वॉन्ट कि अवेयरनेस हो। आजकल के बच्चों में है अवेयरनेस, बट देर आर स्टिल पीपल हु स्पॉइल थिंग्स बैडली। दैट इज द ओनली वन थिंग आई वॉन्टेड टू कन्वे। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you for calling me, guys. Now it's time to say thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. On the behalf of Gajera School, Sachin, Principal Sir, and all my teachers, I pass you the warm thanks. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you, Gajera School, for giving me this chance. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving us your precious time from your busy schedule. It really means a lot to us. Yes. Yes, Yes, ma'am. You have surely added your charm to this event. Not without you guys, okay? And this session was very informative also. yes. Really? Yes. Well, Very that- knowledgeable, It informative. motivates us. Yes, Acha. it really